गुरु रूप संगत जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी और गुरु जी दी प्यारी साथ संगत जी। जी आया नू अज दा हुक्मनामा दरबार साहब सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंदप है भाई। जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई ताई भाई विछड़ चोटा खाए। बिन सतगुर सुख कदे न पावे भाई फिर पछतावे। हर के दास सुहेले भाई जन्म जन्म के किलबिख दुख काटे आपे मेल मिलाई। रहाओ एक कुटुंब सब जियां के बंधन भाई परम भूला संसारा। बिन गुर बंधन टूटे नाही गुरमुख मोख द्वारा। कर्म करे गुर शब्द ना पछाणे मर जन्मे वारो वारा। व्याख्या हे भाई ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ for making us understand the blessings that we have got and the shabad that is resonating and giving the messages कि प्यार करना परमात्मा से आसान नहीं है। हाथ में शीस रखना पड़ता है, या मतलब जान हथेली पे, और वो तभी मिलता है और हिम्मत भी वही देते हैं। We are so blessed that we are having Guru Sahab as our clutch anchor, and he's holding us in these times. And today he has sent Archie Sehgal Aunty amongst us, who is going to share her blessings. And as they say, जितना प्रभु का गुणगान सुनो उतना कम है, दोनों तरफ रहमतें बरसती हैं। With folded hands and bowed head, would request Aunty to share her journey with Guruji Maharaj and her blessings. जय गुरुजी महाराज, नमस्ते, सत श्री अकाल गुरुजी, नमस्ते, सत श्री अकाल and a very good morning, Sangat ji, Anu ji and Sabodh ji. Needless to say, I'm bowed down in gratitude for this opportunity yet again, and emotionally, I am going through such a worst period right now. So bad that I'll begin from here because this all is so connected, so connected. So for the past 1 week or more, I have hit an emotional rock bottom. Maybe I don't say worst that can happen to a person, because we do not know what worst is. Kehte hain na, life is tough, and the other person says compared to what? So it's like that. So I never call it कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इससे बुरा होने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो हुआ है वो बहुत बहुत बुरा मेरे साथ इमोशनली हुआ है। इतना बुरा हुआ that day before, रात को 12 बजे I was in the car. I mean, very upset, all tears, all helpless, all helpless. And of course, needless to say, Guruji is always with all of us.
But पता नहीं मुझे क्या हुआ. I told my husband, I said, please turn the car to defense colony. It was like जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रहा. अब तो मैं मतलब बिल्कुल ही collapse हो जाऊंगी. So I said, please आप गाड़ी ले चलिए उधर defense colony की तरफ. In one line I said, and I closed my eyes. I didn't even know he's taking it there, and whether he's taking it there or not, which he would. He's also a devotee, and within 3-4 minutes, we were outside Guruji's Jalandhar Mandir. And I was in my night suit, all tears, and I got down from the car and I held the gate and I said nothing. I said, Guruji, 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 only this, because I cannot complain to him. He's given me so much in life. He's held me so strongly in life. I do not have the right to say that why Guruji, no whys. And I do not ask him also. So I cannot say कि Guruji इस चीज को ठीक करो. All I ask is strength. Guruji रक्षा करना, Guruji सद्बुद्धि देना. Anyway, उस टाइम रात को 12 बजे तो it was, of course, I love to do दंडवत प्रणाम over there at that gate, क्योंकि जब वहां प्रणाम करो, माथा लगाओ, गुरुजी महसूस होते हैं वहां पे. So I did that, and then holding the gate, I was Guruji, Guruji, Guruji. And as I've always shared in my satsang before also, he comes like a cool shower. I wouldn't say I saw any sign. I looked, मुझे लगा मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, अभी कोई शेडो नजर आएगा गुरुजी का, कोई लाइट फ्लिकर करेगी वहां पे. ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. लेकिन वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, रेगिस्तान, तपते हुए रेगिस्तान में एक ठंडे से झोंके की तरह, एक बरसात की बूंदों की तरह, ठंडी बूंदों की तरह एक महसूस हुआ मुझे. And when I sat back in the car, I was quite cool. I was just cool. I had the strength, all the strength. And yesterday when Subodhji had texted me that it was around noon in India, and he had said that tomorrow morning. So now this morning hour, when this satsang happened, this is my, all satsangs are always your favorite and you always look forward to it. But especially with this one, I find the discipline, I find the flow of the whole thing very, very captivating and in a very predictable. I'm a person who gets into very predictable situations. Why? Because everything around me is so unpredictable. So I want कि अगर कुछ जिस चीज में मैं लॉग इन कर रही हूँ, मुझे पता हो कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कितने बजे क्या हो रहा है. So this is one thing which really brings me to this this platform time and again. और जब सुबोध जी ने मुझे कहा तो मुझे लगा कल सुबह, of course I could not say no. I would never say no to a satsang. And I instantly said, yes, uncle, why not? Right, और बाकी का सोचा बाद में देखी जाएगी, अभी अंकल को तो कंफर्म करो और उनको थैंक यू किया. And now I reach, this is my workplace. I reach here at about 8:30, 8:45. So now this meant an hour earlier. And यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैं बहुत देर से sleep disorder से struggle कर रही थी. My mornings during this pandemic had become very bad. So bad, so lazy, because I've been upset. So naturally रात को sleep issues, anxiety issues थे, तो mornings were bad. And मुझे हमेशा लगता था I really wanted to log in to this platform, लेकिन या तो मैं कर नहीं पाती थी, और जब मैं करती थी तो it used to be like एकदम अपने बेड में ही आप स्विच ऑन कर रहे हो और सुन रहे हो, और मुझे अपने आप में एक बड़ी अच्छी फीलिंग नहीं आती थी. जब मैं देखती थी कि दरबार में तो आरती हो रही है, और आरती है और आप आराम से अपने बेड में हो और सुन रहे हो, नो, आई मीन जिसे कहते हैं ना दलिद्र, मुझे वो दलिद्र लग रहा था. और मैंने गुरुजी को ये कहा था, मैंने कहा गुरुजी मेरा स्लीप डिसऑर्डर, दो बातें मैंने गुरुजी को कही थी. गुरुजी मेरा प्लीज टेक केयर ऑफ माय स्लीप डिसऑर्डर. नो गुरुजी, आपने इतना अपने फोल्ड में लिया है, प्लीज मेरी मॉर्निंग को अपने फोल्ड में लीजिए ना, नहा होके तैयार होके मैं आपके फोल्ड में होना चाहती हूँ. और गुरुजी मैं कोई ऐसी पीसफुल जगह चाहती हूँ. I'm in a joint family, a super joint family. Like I have my sons and my daughter-in-law, and then I have my mother-in-law, and I have my brothers-in-law and their wives. So we are a super joint family. So obviously I do not have a corner which is entirely can be to myself. Though I have Guruji's blessed me with a darbar at home also, but still I'm not able to do my quality time with him.
एंड और स्लीप डिसऑर्डर के कारण सुबह का टाइम ही तो हो सकता है, तो सुबह का टाइम भी नहीं मिल रहा था. संगत जी, मैम, यू कुड नॉट बिलीव, आई डोंट नो व्हाट ही डिड टू दिस. एंड सत्संग सुना किसी का, उन्होंने कैसे बताया हाउ उन्होंने अपनी मेडिसिन ही छोड़ दी गुरुजी के चरणों में. तो मैंने भी ऐसे किया. वन ऑफ द मेडिसिन आई वाज टेकिंग, ऐसे नहीं लेनी, देखी जाएगी, यू नो. एंड समहाउ गुरुजी स्टिल, you know, he's so kind, he blessed me with good sleep. And I started putting an alarm, and alarms ko to main miss kar jati thi, jump kar jati thi. But now, since now many days, alarm, ek alarm pe I was jumping out of the bed. And all through that this satsang goes on, I used to be getting ready. And jab शुक्राना होता है इस सत्संग का, उस टाइम पे मैं यहाँ दरबार में अपनी जोत जला के या ट्यूब लाइट चला के बैठ के यहीं पे वो शुक्राना करती हूँ. सो व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग. आई मीन गुरुजी कितनी नजदीकी से, कितने प्यार से बात सुनते हैं. नंबर 2, मैं कहती थी मुझे ऐसी जगह चाहिए गुरुजी जहाँ मैं कंफर्ट लविंग, ऑल ऑफ अस आर लिटिल कंफर्ट लविंग आल्सो. सो गुरुजी गर्मी बहुत है, जहाँ पे घर पे दरबार है वहां पे डायरेक्ट एसी नहीं होता, मेरे से बैठा नहीं जाता उतना टाइम. मेरे को कोई इशू भी चल रहा था विद माय स्किन एलर्जी, सो मेरे से आई हैव बिकम लिटिल फोटो सेंसिटिव, सो गर्मी में मुझे प्रॉब्लम होती थी. सो वो भी नहीं हो पा रहा था. एंड बिफोर आई कुड थिंक अबाउट इट, मुझे नहीं पता चला कैसे, ये करने के बाद मुझे पता चला दैट वन फाइन डे जो मेरी वर्क प्लेस पे दरबार, छोटे से तरीके से दरबार एक रूम में था, एंड नाउ द इंस्टीट्यूशंस हैव ओपन्ड एंड दैट रूम वाज नीडेड फॉर वर्क, फॉर पीपल टू कम. सो ये फर्स्ट फ्लोर है, एंड यहाँ पे इस रूम में बहुत सारा सामान था दैट नॉट जंक आई वुड से, बट स्टिल जो डम्प सामान होता है, जो एसओएस यूज होता है तो आप निकालते हैं. आई डोंट नो, एक दिन मैं यहाँ खड़ी हो गई इस रूम में और मैंने अपने साथ हेल्पर्स दिया, सिर्फ हमें ये क्लीन करना है. एंड हमारे पास आधा घंटा था, क्योंकि आधे घंटे बाद हमारे पास और लोग आने थे. कोई लोग मेरे ऑफिस में मुझे मिलने आने थे, लेकिन मुझे लग रहा था वो जैसे दिमाग में कट जाता है कि नहीं, मुझे अब ये गुरुजी का काम शुरू किया है तो खत्म करना है. एंड आई एम लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड आई एम सेइंग गुरुजी, आई मीन I never ask him for bigger things. मैं इतने मेस में होती हूँ और मैं उनको नहीं कहती हूँ कि गुरुजी इसमें से निकालो, और ऐसी चीजों के लिए उनको बहुत ट्रबल करती हूँ. आई सेड गुरुजी ये तो हाफ एन आवर में करना है ना क्लियर, एंड दिस वाज लाइक भरा हुआ छत तक. सो आई सेड गुरुजी ये तो करना है ना, आप कराओ ना, आप ही कोई एनर्जी भेजो हमारे हाथों में. एंड यस ही डिड दैट. सबके हाथों में ऐसे था, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई हैं टिक 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 करके, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, कोई वो फास्ट फॉरवर्ड सीन होता है. एंड दिस रूम वाज ऑल क्लियर इन half an hour. And then I did my work, and in the later half of the day, this darbar was said, Guruji blessed me with this. And now my morning starts here with the sky, the trees, the sun, the real sun of our lives, Guruji. Isn't he shining? Actually, and isn't he beaming? And isn't he radiating light as sun? And more, he's not even sun, he's much more sun. He's a ball in his hand. So shukrana Malik, shukrana, shukrana, shukrana. So ye meri morning routine and Guruji. And yes, now coming back to satsang today, so I won't say मैंने reluctantly हाँ की, reluctance का मतलब ही नहीं है. मुझे बस ये कहा कि गुरुजी परीक्षा देखो कैसी कैसी लेते हो, एकदम ब्लैंक हूँ, पता ही. और हमेशा आई यूज्ड टू बैस्क इन दिस ग्लोरी कि जब भी मुझे सत्संग शेयरिंग के लिए कहा जाता है, मेरे पास एक नया सत्संग होता है. So Guruji, here I am blank, all upset, mentally, emotionally, all devastated, and this sharing. But then there's a reason if you've chosen me to do so at this time. And the moment I log in to satsang, शब्द की जो लाइन चल रही थी, ना तो मैंने वो बीच में से सुनी, ना मैंने उसके बाद, बिल्कुल वहीं पे, जो तो प्रेम करंदा चाओ, सिर तर गली मेरी चली आओ. Yes, and then it didn't end till here. जब अनु आंटी ने बाद में हुक्मनामा के बाद में व्याख्या की, उसमें भी तो यही कहा कि रब नाल प्यार करना आसान नहीं है. एंड यस, ये आसान नहीं है, लेकिन it is worth it. It is worth every pain. पेन बहुत है, लेकिन उस पेन में एक इतना डीप डाउन सुकून है कि गुरुजी आपको तो पता है कि ये पेन क्यों है. आपने ऐसा भी कोई कर्म था जो ऐसे कटवा रहे हो, नॉट दैट ये आसानी से कट रहा है, बहुत मुश्किल से कट रहा है, लेकिन गुरुजी कटवा तो रहे हो
वो मुझे हमेशा लगता है जब कोई तकलीफ आती है कि जैसे कर्मों की एक लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और उसमें से जब ये तकलीफ आई एक कर्म टिक ऑफ हो गया. सो आई वाज टेलिंग हिम, गुरुजी लगता है 2-4 इकट्ठे टिक ऑफ कर दिए हैं. सो दैट्स गुरुजी, सो काइंड, सो बेनेवोलेंट. तकलीफ में भी उनकी इतनी इतनी कृपा महसूस होती है. एंड उस रात को जब मैं इतनी डेविस्टेटेड, इतनी शैटर्ड थी, I had not planned I would go to Guruji's mandir, and I was not in my senses to plan, and I would not plan it at midnight 12 to go there. And how I went there, how I landed there, and how I was holding his gate and saying Guruji, Guruji, Guruji. So that was also Guruji. He called me there to bless me. And today also he made me sit here in front of all of you to share my satsang, to bless me. So Anantam, Anantam, Shukrana Malik, Anantam, Anantam, Shukrana. So I don't know till which juncture have I shared my journey with on this platform with all of you in my last satsang. But मैं जो बहुत instrumental है, instrumental बहुत कुछ है, पर जो अभी mind में आ रहा है शेयर करना, जब आरती चल रही थी तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि क्या शेयर करना है. So जो mind में आया तो ये था कि yes, I questioned Guruji once that Guruji, on my conscious level, I'm in your fold since 2018, and आप ऐसा हो नहीं सकता गुरुजी, जिस तरह की दीवानगी मेरे अंदर है आपके लिए, और जिस तरह का रहमो करम आपका है मेरे ऊपर, ये कोई 1-2 साल की बात तो हो नहीं सकती गुरुजी. ना तो मुझे आपसे ऊपर कुछ नजर आता है, ना आगे ना पीछे. मेरा तो ये हाल हो गया है कि मैं as any North Indian girl, we all are, हम लोग कितनी जगह माथा टेकते थे. हम लोग तो मतलब हर वक्त मन्नतें ही मांगते रहते थे कि मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये वाले सोमवार के व्रत रख लूंगी, ये इस माता पे होके आऊंगी, ये हो गया. एंड suddenly my life has come to one stop. I cannot think beyond it. इतनी दीवानगी मेरे अंदर है गुरुजी, और वो आपकी डाली हुई है, आपके रहमो करम से. सो गुरुजी, ये तो कोई 1-2-3 साल का रिश्ता तो ये हो नहीं सकता. एंड आप पढ़ा भी यही है, सुना भी यही है कि जन्म जन्म का होता है. तो गुरुजी, कब से क्या लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ रही तो हमेशा ही बड़ी टॉप्सी टर्वी येट मिरेकुलस. ऑलवेज मेरी लाइफ को मैंने ऐसे ही डिफाइन किया है, ऑलवेज बीन टेकन टू द क्लिफ, pushed from there, and then there's a hand which has been catching me so nicely. And I have not had a miserable life. No, I've had a very blessed life, but always go through challenges, as big as challenges as one can imagine. So कौन सा हाथ था वो जो पकड़ रहा था? So in thoughts के साथ I talk with him and I even forget. And then one day suddenly मेरी आंखें मैं बंद करती हूँ, again with this thought, and मेरी आंखों के आगे एक जैसे flashback चलना शुरू हो जाता है. In the flashback, I go back to the time that was constantly instances आने शुरू हो गए. पहले तो ये पता ही चलना शुरू हो गया that I'm in the family who was Guruji's friends. They were friends, my in-laws. Unfortunate, or it was not my time that I didn't get connect. I was never taken to. I used to accompany my in-laws everywhere, but only Guruji's place I was never taken to. Neither I showed interest. So that was not, I'm sure I even know the reason. क्योंकि जिस तरह की दीवानगी मेरे अंदर गुरुजी के लिए है, अगर मैं गुरुजी को तब मिल लेती तो कैसे ये सारा ग्रस्त जीवन, ये सब कुछ ऐसा नहीं है लोगों ने किया है, बट पता नहीं मैं कैसे कर पाती. गुरुजी को शायद पता होगा मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतने बैलेंस कर सकूं. गुरुजी ने मेरे से इतना कुछ करवाना था, सो गुरुजी को लगा होगा वो मेरा टाइम नहीं है. And yes, I had known this, that Guruji had expressed it to my family that he wanted to come to my marriage, and he had complained कि आपने शादी पे मुझे बुलाया नहीं. So somewhere with that शादी, I feel कि वो connection गुरुजी का कुछ कहने का कुछ मतलब होगा, because we all know महाराज ने अपने physical time में कोई भी ऐसी अगर एक sentence बोला है तो वो meaningless तो नहीं हो सकता. सो उसमें कोई बहुत छिपी बात होगी, और वो शायद छिपी बात यही है कि अब देखिए 32 years later हर एनिवर्सरी मैं उन्हीं के चरणों में करती हूँ. I invite him and he also comes and shows his presence. Apart from that, in about 2000, this should be 2006, 2007, I don't remember clearly,
I was in the market. I was sitting in the car, and my भाभी जी जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया गुरुजी के साथ. आप देखिए वही भाभी जी जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया वही मेरे साथ है. वैसे वही मेरे साथ होते हैं हमेशा, through thick and thin, through happy times and bad times. So she was with me, and she had probably gone into a shop, and I was in the car. I vaguely remember. And एक बाबा जी आए. बाबा जी in the sense he was दाढ़ी वाले, से गुरुद्वारे से कोई आ रहे हैं. ही एंड उस टाइम पे जलंधर में ये बहुत हो रहा था कि लोग ना आपका गाड़ी का शीशा नॉक करते हैं. दे हैव अ मिरर इन हैंड, दे हिप्नोटाइज यू एंड रॉब यू ऑफ योर मनी. सो उन्होंने बाबा जी ने मेरा गाड़ी का शीशा नॉक किया. और मेरे को ये बात पता थी, हम लोग बहुत कॉशियस थे इस बात को लेकर. मैंने माइंडलेसली अपना शीशा नीचे कर दिया. तब ऐसे वाला शीशा था, नीचे कर दिया. ही हैंड्स मी ओवर गुरु नानक देव जी का पॉकेट सर, एंड साथ में एक माला, येलो बीड्स की एक माला. एंड एक ही सांस में वो मुझे कुछ 100 ब्लेसिंग्स दे रहे थे. एंड उस ब्लेसिंग्स में डेफिनेटली नाउ व्हेन आई थिंक कुछ तो था कि तेरी जिंदगी बदल देती है. नाउ व्हेन आई लिसन टू सत्संग्स ऑफ गोल्ड संगत, और वो जो सेंटेंसेस कुछ बोलते हैं मेरे रेजोनेट करते हैं मुझे वो. एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत कुछ कहा. आई हेल्ड दैट इन माय हैंड, एंड दैट मैन गोज अवे. भाभी जी comes in the car, and I tell her कि ऐसे कहती. she said तुमने like ले लिया. I said इतनी दुआएं दी, इतनी blessings तो कभी किसी ने नहीं दी मुझे. And he said your life will change from now. पूरा टर्न आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, तेरी जिंदगी बदल देती. he said. तो she said अच्छा ये तो बहुत अच्छा है. एंड वो एक येलो वाली माला. अब मेरा वहां से गुरु नानक देव जी के साथ में बहुत जुड़ गई. अब बहुत ज्यादा गुरबानी से तो नहीं, लेकिन गुरु नानक देव जी के साथ right at that time I used to just like I find Guruji so mesmerizingly beautiful. So I used to find Guru Nanak Dev Ji so calming, so beautiful, so good. इतनी में से मतलब मुझे रेडियंस लगती थी, बड़ी पीस लगती थी उनकी शक्ल में. एंड मैंने वो स्वरूप भी रख लिया अपने पास. और वो माला के लिए तो मेरा लकी चार्म बन गया, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स, टर्न ऑफ इवेंट्स आने शुरू हो गए. सो दैट माला वुड रिमेन विद मी, नॉट नोइंग क्या है, किसने दिया है, बट माई लकी चार्म. आई वुड कीप इट ऑल द टाइम इन माय वॉलेट. अब टाइम बीतता गया. आई मीन पंजाब. मैं हिंदू फैमिली में हूँ, लेकिन मैं गुरुद्वारे से बहुत जुड़ना शुरू हो गया. मुझे बहुत ज्यादा एक पुलिंग से शुरू हो गई. एंड मैंने माय फादर इन लॉ, I was very close to him. We lost him he battled with a disease for about 2 years, in which I got yet closer to him for some reasons. वो 2 years मैंने और डैडी ने बहुत ही इतनी ज्यादा physical proximity में बिताए हमने. When he was battling the disease, when he was in and out of the hospital, तो और ज्यादा closeness होगी. So when I lost him in 2008, I was like blank. And I just knew that I have to do something in my life, because of late daddy had become quite a purpose of life. So I felt now like I'm like quite hands free, bachche bade hain, and I should do something. I started off with a company. I sat on I with that mala and with name of God, I sat on my computer, and I started developing a curriculum. Sanjay, I wasn't so qualified. I'm not so intelligent. I am. All I know is that my fingers were moving, and a total game changer curriculum was developed. It was a game changer in Punjab. And when I went to different colleges again. You know how a Guruji sends people who will always be there at your turning points. How else does he tell you that he was there? So again, my Bhabiji, the same Bhabiji, she gave me an idea to contact certain people for this. So I followed that path, and there was no looking back. I was all over Punjab with my training company. And again, I would say, Guruji, you know it, Guruji, and I know it. मैं जो कर रही थी, मैं उसके काबिल नहीं थी. वो करिकुलम कैसे बन गया? वो करिकुलम जब मैं प्रेजेंट करती थी, लोग क्यों हैरान हो जाते थे? And then came now the practical aspect where I had to go and perform. I had to
trained engineering students, MBA students, law students, MBA students for interviews. And every morning when I would sit in the car to go there, मेरे को एक मेल आती थी, right? उस मेल में I might have subscribed sometime to some newsletter, I do not know. एक मेल आती थी और उस मेल में कोई ना कोई anecdote होता था. इतना interesting anecdote होता था, which would connect to my lecture of the day. So I would begin my, I became very popular for my sessions that it begins with anecdotes. I would begin with an anecdote, the students would connect to it. There used to be happiness and there used to be applause, and hence, of course, a receptivity of the students would come. So we all know if our audience has receptivity to listen to us, only then they will understand and agree with us. So it worked for me like anything. And one after the other, the anecdote would come, I would read, I would deliver. So I don't know from where it was coming. So till the time I was running that company, anecdotes came. After that, it stopped. So fine, I would have, I don't remember, I clearly do not remember कि मैंने कभी subscribe किया था. लेकिन अगर मैंने किया था, तो वो उतने time में ही anecdotes क्यों आए? And then I had one client. I would always say him, I would really like him because he was a Sardarji and his facial features जो हम गुरुजी का उनका गुरु नानक देव जी का देखते हैं जनरल स्वरूप जो पंजाब में जैसे देखते हैं हम नॉट जैसे बड़े मंदिर में हैं जो जनरली पोस्टर्स पे होता है तो उनकी शक्ल वैसी थी तो मैं हमेशा उनको कहती थी ये बात एंड एक हमारी बड़ी फॉन्डनेस थी उनकी फैमिली के साथ मेरी सो नाउ ट्रेनिंग कंपनी का ट्रेंड पंजाब में नीचे आ रहा था बिकॉज हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है द कॉलेजेस वर ओपनिंग देयर ओन डिपार्टमेंट्स द इंग्लिश डिपार्टमेंट्स they already had our curriculums you know kind of recession had hit because so many universities were open in Punjab so they wanted to cut on the cost so now this gentleman came to me and he said that I want to open a school and I want your guidance so I just told him that I know nothing about this, what you're talking. Said, no, anyway, we want you to do. The couple came, we want you to do this. And I said, you look so much like Guru Nanak Dev Ji. I'll have to do it for you. I'll come. All right. He was in another town, about 1 hour from Jalandhar. I'll do it. And एक और इतनी strange बात उस time पे, जो मेरा जो जहाँ पे मेरा ऑफिस था, उसका जो बैकयार्ड था, वो नेबर्स के बैकयार्ड से जुड़ता था. एंड वो जो नेबर्स थे जो पीछे वो एक प्रॉपर जट सिख थे अमृत वेला करने वाले जट सिख लाइक 3 o'clock दे गेट अप एंड नित्य करते सो उन्होंने गुरु नानक देव जी का एक पोस्टर अपने बैकयार्ड में लगाया हुआ था जो उनका बैकयार्ड मेरे बैकयार्ड को फेस कर रहा है सो दिस यू विल नेवर सी आई मीन आई हैव नेवर सीन इन पंजाब एनी सिख फैमिली विल पुट गुरुजी's पोस्टर गुरु नानक देव जी's पोस्टर वो बैकयार्ड में रखेंगे प्रॉपर्ली फ्रेम टांगा हुआ as if मेरे लिए टांगा हुआ so every time I would have a problem there in the office I would rush to my backyard I would have to look at Guru Nanak Dev Ji and come back and शिव भक्त तो हम लोग हैं ही North Indian so this went on I again went there I said बहुत ज्यादा Guru Nanak Dev Ji आपकी जैसी शक्ल है इस क्लाइंट की ये तो काम करना पड़ेगा so I did that again Guruji knows and I know and no one else will जो मुझे प्रोफेशनली जानते हैं वो नहीं मानेंगे इस बात को मानेंगे तो कहेंगे ऐसे कैसे कर दिया तुमने सो गुरुजी नोज एंड आई नो मैं उस काम के काबिल बिल्कुल उस काम के काबिल नहीं थी और इतनी सक्सेस उस काम में मिली इतनी सक्सेस मिली और मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे मिल रही है एंड देन दैट प्रोजेक्ट केम टू एंड एंड सडनली ट्रेनिंग्स आल्सो केम टू एंड आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू नाउ सेम जेंटलमैन calls me and says there's a gurdwara in Jalandhar very popular gurdwara ma'am they want to hire you for adding finesse and adding branding not branding exactly adding finesse and adding little it's about gurdwara I will not be able to use many terms so they want to hire you for that for the gurdwara for the Gurdwara. Can you imagine someone
someone even contacting a Hindu person, a Hindu girl, and then telling ki aake, and that was a Gurdwara cum school, proper Gurdwara, और Gurdwara का एक proper popular CBSE school. So उन school क्या आपको पूरा ग्रूमिंग एंड पीडी लेना है, और गुरुद्वारे का आपको सारा वो देना है, उसका ग्रूमिंग करना है. So and back then 10 years from now I was also so immature. आज मुझे कोई कहे तो मैं हाथ जोड़ के कह दूंगी बस कि मेरे से तो सिर्फ माथा टिकवा लो, मैं कहाँ काबिल हूँ कुछ वहां करने के. And I, the way I dress up professionally and I go there and I start the work and I'm doing, मैं नगर कीर्तन डिजाइन कर रही हूँ. नगर कीर्तन कैसे डिजाइन, कीर्तन दरबार I was designing, and that is where I got to know about Shabad. I got to know details about Sikhism. Again, मैं बहुत ज्यादा गुरुद्वारे की तरफ I started getting drawn, but still I wasn't so disciplined in myself. And I still remember while the uniform for the teachers of that school was full sleeve suits, and so much so that you cannot even wear pajami or a salwar or a trouser. You have to wear salwar. And I would go in my attire, what my company attire was, which was like totally Western. So the educators, the teachers there, they complained to Paiji, not complain, in front of me they said that Paiji, हमें तो आप इतना टोक देते हो, जरा सा सिर से दुपट्टा हिल जाए, जरा सा हमारे कपड़े में फुल स्लीव की जगह क्वार्टर स्लीव हो जाए तो Paiji आप टोक देते हो, और आप देखो कि आप आर्ची मैडम को कुछ नहीं कहते, उनको आप स्माइलिंगली जैसे ही आते हैं सत श्री अकाल कह के उनके सिर पे भी हाथ रखते हो, आशीर्वाद देते हो. To this Paiji said, नहीं ऐ ना ऐ गुरु दा बड़ा काम कर रहे ने, ऐ गुरु दा काम कर रहे ने. गुरु दा केड़ा काम कर रही हैं? I'm being paid for it. I come there, I do my little expertise that I have. But इतना उस टाइम पे again ये कौन, I would always look up, you know, that up there, who are you? आते ही आप गुरु नानक देव जी, या आप कर रहे हो शिव जी, या आप कर रहे हो माता रानी, आप कर रहे हो शिरडी बाबा, आप ये कर रहे हो. शिरडी बाबा को भी बहुत मानती थी मैं, एंड उनको भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. अब मेरे से मैं बहुत गिल्टी भी फील करती हूँ कि मेरे से अब ये नहीं कहा जाता मैं इसको मानती हूँ. मैं अब सिर्फ अब गुरुजी के अंदर सब कुछ आई एम श्योर है, बट मैं सिर्फ गुरुजी को मानती हूँ, और जिसको मनवाना होगा, जहां सिर झुकवाना होगा, वहां गुरुजी चाहे मेरा सिर झुकवाएं, चाहे मेरा सिर कटवाएं, जौन सा भी दरबार हो, वो गुरुजी की मर्जी है. मैं अपनी मर्जी से कहीं पे किसी और दरबार में नहीं जा सकती. So this is how I came close to Gurbani, and yes, गुरुजी ने पूरा मेरे आगे फ्लैशबैक किया कि ये कैसे, तुम्हें क्या लगता है कि कौन था तुम्हारे साथ, इतनी टर्न ऑफ इवेंट फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी होम मेकर टू बिकमिंग the professional of Punjab. How come? I mean, how come? And yes, उसके बाद ये काम भी हो गया, ये 1 year of this भी हो गया. इतनी डाइवर्स डायरेक्शंस में मुझे काम मिलने शुरू हो गए कि मैं हर वक्त ऐसे देखती थी कि who is this doing it, who is this doing, ये कैसे काम मिल रहा है. और ये नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थी पर्सनल लाइफ में, और इवन वर्क लाइफ में प्रॉब्लम्स हर एक दिन ऐसी आती थी कि लगता था दीवार में सिर मार दूं, बिकॉज पंजाब बैक देन नॉट एट ऑल वुमेन फ्रेंडली था. इट वाजंट इजी फॉर अ वुमन टू वर्क इन पंजाब. सो बहुत ही ज्यादा मुश्किल आती थी, हर मोड़ पे आती थी. एंड इसके बाद जो मेरे वो क्लाइंट जिनकी शक्ल मैं कहती हूँ उनसे मिलती, मुझे लगता है गुरु नानक देव जी से मिलती है, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मैम बैठे हुए, एंड मैं उनकी तरफ ऐसे देख रही हूँ, एंड अगेन जब उनकी तरफ देखती थी गुरु नानक देव जी की पिक्चर आपको क्या कहने, ही सेज, मैम व्हाई डोंट यू ओपन अ स्कूल. आई सेड स्कूल, I said I'm not BEd, I'm not entity, I'm not worked in any school, you telling me to open a school. said क्यों नहीं, ये मेरा किसने खोला है, आपने तो किया है. I said नहीं वो तो आपका था, आप कर रहे थे तो मैंने कर दिया, ऐसे नहीं मैं इंडिपेंडेंटली कर सकती. So, but he planted that seed in my mind, and all while I was coming back, I was thinking क्या करूं, कैसे करूं. And before I could think much, again I was on my computer, and वो fingers कैसे move की, I did not have any experience, anything, and वो fingers में कहाँ से क्या आ रहा था, और एक curriculum develop हो
to which many people ask me from where the affiliation has come, from where have you taken this, on what pedagogy do you work? How do I explain the pedagogy? The pedagogy is Guruji. And then जब मुझे अभी भी हम ह्यूमन होते हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं किया कभी फेथ को, लेकिन अभी भी क्वेश्चन आता था, गुरुजी आप कब से थे मेरे साथ, कब से थे, वो आप ही थे ना गुरुजी, वो आप ही थे ना, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा था. एंड देन फेसबुक पे मेमोरीज आती है, राइट. एंड मैं ये क्वेश्चन अभी गुरुजी को करती हूँ, कर रही हूँ, और साथ में फेसबुक पे जिस ईयर में स्कूल ओपन हुआ था, फर्स्ट बैच, दे वर अबाउट 10 चिल्ड्रन, उनका साथ ट्री प्लांटेशन की कोई पिक्चर गई होगी सोशल मीडिया पे, और वो मेमोरी आई. एंड उस मेमोरी में आउट ऑफ द 10 चिल्ड्रन वाज वन चाइल्ड जो गुरुजी की एक बहुत करीबी संगत, मैं नेम नहीं लूंगी, बहुत 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 ज्यादा करीबी संगत आंटी जलंधर की, जिनकी वो ग्रैंड डॉटर थी. एंड वो ग्रैंड डॉटर अनफॉर्चुनेटली, या जैसे गुरुजी की मर्जी, वो बच्ची सिर्फ 5 साल की उम्र तक जी, और 5 साल की उम्र में से 2.5 साल वो बच्ची मेरे पास थी. सो आई इंस्टेंटली सॉ दैट चाइल्ड, से ओ गुरुजी, इस संगत का, आपकी इतनी प्यारी संगत का बच्चा वाज वन ऑफ दोस चिल्ड्रन. एंड जो उस बच्चे की मदर है, शी वुड ऑलवेज प्रमोट द स्कूल अ लॉट. Always, she was like, जैसे कोई लोग बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, she was like, she really promoted it with time. So I said, yes, Guruji, it was you. And then मेरे आगे सब कुछ आना शुरू हो गया. That yes, Guruji, वो जो anecdotes आते थे, Guruji वो जो करिकुलम बना, वो सब 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 आप ही तो करवा रहे थे Guruji. And आज जब मैं यहाँ पे जब बैठी होती हूँ मॉर्निंग में, before my work starts around 9 till then I'm here. So मैं यही इनकी तरफ देख के यही पूछ रही होती हूँ, कह रही होती हूँ कि गुरुजी पता नहीं कैसा एक ब्लेंड ऑफ कोई बहुत अच्छा कर्म और कोई बहुत बुरे कर्म किए हैं. जो बुरे कर्म आपको कटवाने पड़ रहे हैं, आपका भी बहुत जोर लग रहा होगा, प्यार तो आप बहुत ज्यादा करते हो मुझे, और लेकिन साथ में अगर इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें आ जाती हैं मुझे, इसका मतलब आपको कितनी तकलीफ होती होगी मुझे वो तकलीफें देते हुए. And as I said, आज के सत्संग में, शब्द में, व्याख्या में बहुत ही इसका मुझे आंसर मिला. एंड रिसेंटली, नाउ दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट रिसेंट जस्ट आजकल का इंसिडेंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो इट्स माय ड्यूटी टू शेयर कि पीछे गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है, व्हिच कंटिन्यूज. एंड इट वाज जुलाई एंड आई वाज इन, सारा क्लोजर था यहाँ पे, सारे इंस्टीट्यूशंस का पंजाब में एब्सोल्यूट क्लोजर था, एंड देयर वाज नो चांस ऑफ ओपनिंग अप. And my birthday is on 2nd of August. So on 30th or 31st, my team is talking to me and saying jokingly, so ma'am, what would you like to what will you like to do on your birthday, and what will you like to wear? And I said, I just instant, again, I was not talking to Guruji, I was talking to them. I said, every day is same for me, unless on my birthday. I said, the birthday doesn't hold any much significance to me this time. So unless I wear my uniform and I'm at the school gate receiving the children. So this was 31st morning or 30th I was talking, I don't know, 29th, 30th, 31st. But 31st evening, which was Saturday, Saturday, yes. No one in the city got this circular government's notice. No one. I mean, I'm a very small player of my industry, very, very small one. There are such biggie, such big players. And उनको भी जब मैं कॉल कर रही थी कि एक नोटिस आया है, एक सर्कुलर आया है, that the schools are allowed to open from 2nd August, that was my birthday. And जब भी पहले तो नोटिस आया, and I was like this, I was reading it, and my tears that Guruji, I mean, I always end up saying this only. मेरे को गुरुजी हमेशा खुशी में या दुख में इसी सिचुएशन में डालते हैं जब मैं कुछ और नहीं बोल पाती हूँ, सिर्फ यही कहती हूँ, गुरुजी, and I'm like, गुरुजी, I was not even talking to you. Or 2nd August को all the days the schools are opening. Now I'm calling up people, I'm calling up these big players of the industry, and no one knows. And no one is ready to open. But yes, the notice that I had
was valid because it was direct from the education department, and not that I am very connected person or something. No, वो भी एक गुरुजी की करनी है कि वहां पे एक मेरा ऐसा पेरेंट एक वर्क करता है और बड़ी अच्छी पोजीशन पे करता है, जो मुझे और इस इंस्टीट्यूशन को फॉर हर ओन पर्सनल रीजंस बहुत प्यार करती हैं। वो बहुत ज्यादा इससे बहुत प्यार करती हैं। शी इज वेरी काइंड कि जब भी कोई क्लोजर का आना हो या ओपनिंग आना हो, तो जैसे ही मेल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट पे पहुंचती है, शी सेंड्स मी। सो no one was prepared. We declared a working Sunday for our team and for the consent of parents. First we did this, and on 2nd August morning I was wearing my uniform and I was at the school gate receiving the children, and I was looking up there, oh Guruji, Guruji, Guruji. So this is what we all know Guruji is, how he just, you know, he वो तो विशाल है, वो तो कितना विशाल है, मैग्नेनिमस है। वो हमारे को ब्लेस करने के लिए, हमारे तक पहुंचने के लिए, मुझे लगता है अपने आकार को कितना छोटा, कितना वो करके फिर हमारे में समा के हमें ब्लेस करते हैं। I mean, his magnanimity is so huge. एंड अभी तक के लिए तो मुझे इतना ही बहुत ब्लेसिंग्स है। अगर मैं रूटीन की बात करूं तो एवरी डे विद गुरुजी इज अ ब्लेसिंग। यस, एक आई वन लास्ट सत्संग एंड देन अभी आज्ञा लेंगे महाराज से। सबका भी टाइम हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं आई एम सॉरी, मैं बार बार ये कह रही हूँ, कई लोगों की आज सुबह भी होगी इस वक्त और उनको ये सुनना पड़ रहा है कि रिसेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी। अब थी तो अब थी, हूँ भी हूँ बहुत हूँ। लेकिन देखिए क्या गुरुजी की महिमा है ना, इतनी डिस्टर्ब हूँ इस वक्त से। कहते हैं, मैं कहती हूँ गुरुजी कचूमर निकाला हुआ है आपने, सो मेरे दिल और दिमाग का कचूमर निकाला हुआ है गुरुजी ने। लेकिन फिर भी आई एम ऑल ड्रेस्ड अप, आई एम लुकिंग फेयरली गुड टू लुक एट, ऑल मेड अप, and I'm sitting and smiling, and it is not a fake smile, it's not a forced smile. So if Guruji can make me do during this, so imagine वो कितना, किस तरह से उनका एक unseen embrace मेरे साथ चल रहा है। So ये आज से कोई 15 दिन पहले की बात होगी कि again I was very disturbed, and someone who disturbs me a lot, my peace of mind a lot, I was invited to a satsang. So I was not ready to go there because very humanly thought, someone who's like adding to many problems to my life was also invited there. And I was like कि गुरुजी मुझे माफ करना, मैं सत्संग पे नहीं आ सकती because वो person मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे देते हैं कि मैं तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मेरे पास सत्संग की वाइब तो रहेगी नहीं, तो मुझे आप एक्सक्यूज ही करिए। But he would not listen to me. She would say, it's between you and Guruji. How can you talk so humanly? You know, इतना तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हें तो it's between you and Guruji ना। So तुम देखना, गुरुजी ने ऐसे करना है, उस पर्सन ने आना ही नहीं है ना। और आप एंड मैं उनसे भी आई एम आर्गुइंग, आप भी ऐसे कह रहे हो, समझ नहीं रहे हो, गुरुजी भी समझ नहीं रहे हैं। मुझे नहीं उस पर्सन की प्रेजेंस में बैठना, मुझे घबराहट हो जाती है, मुझे एंजाइटी हो जाती है उस पर्सन से। वो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। एंड भाभी जी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं नहीं, तो देखना गुरुजी ने तुम्हें बुलाया तो तुम्हें बुलाया। ओके, नाउ आई स्टेप आउट। जब मैं स्टेप आउट करके निकलती हूँ, मैं देख रही हूँ दैट पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। नाउ आई एम डबली श्योर दैट द पर्सन इज गोइंग एट द सत्संग। आई कॉल अप भाभी जी लाइक अ क्राई बेबी, मैंने आपको कहा था that person is going to go, आप नहीं मान रहे थे। अब देखना, मैं तो वहां ट्रबल्ड ही बैठी रहूंगी ना, that person is so judgmental and you know बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो क्या, बट भाभी जी would not listen, and भाभी जी की बात I do not disobey, and thankfully अभी तक वैसे जब obey किया है तभी ठीक रहा है, disobey करके प्रॉब्लम ही रही है। So I reach the place, I reach before Bhabiji, right? So I reach there and I sit down, and beautiful vibes of Guruji, and मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, and of course tears are flowing. It does happen when we sit in satsang with Guruji. And इतने में जितनी बार कोई आ रहा है, मुझे लगता है the person is come, करते 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 वहां पे 50 लोग आ गए, and about 40, and that person had not come. I looked at Bhabiji and I said, thank you for
pushing me into coming. I would have missed it otherwise. And मैं गुरुजी से भी बहुत apologize, rather गुरुजी से मैंने रास्ते में ही apologize कर लिया था कि गुरुजी मैं बहुत human react कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर देना प्लीज, बट यू नो ना वो पर्सन इतना मेरे को हार्मफुल हो जाता है, फिर भी मैं आपके आगे ही रोती हूँ, तो इसलिए मैं डर रही थी, बट लो गुरुजी अब मैं आ रही हूँ, आप ही प्रोटेक्ट करना. And I thank भाभी जी in इशारा कि thank you, I'm here. And then गुरुजी में मेरा पूरा मैं ध्यान लगा के बैठी हूँ आंखें बंद करके. I said महाराज इतना लो फील कर रही हूँ, फिजिकली भी, तबीयत भी नहीं ठीक लग रही, इमोशनली भी. आज तो महाराज मन कर रहा है कि आपकी वो जो अनसीन जप्पी तो मेरे साथ हमेशा रहती है, आज तो महाराज मन कर रहा है कि आपको महसूस करूं किसी तरह से. एग्जैक्टली आई एम इन दिस पोज, आपको महसूस करूं किसी तरह आपको महसूस करूं. महाराज प्लीज हग मी ना, महाराज हग मी. एंड मैं ये बोल रही हूँ, एंड साथ में ऐसे बोलते हुए ऐसे करके मेरा हाथ जाता है, एंड माई हैंड्स आर सोक्ड इन, जैसे किसी ने रोज परफ्यूम में आपके हाथ डिप कर दिए. आई हैड नॉट टच्ड इवन अ फ्लावर, से डिप कर दिए. एंड मैं फिर ऐसे करती हूँ, द फ्रेग्रेंस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट्स पियर्सिंग माय नोज. आई एम लाइक गुरुजी गुरुजी गुरुजी, इतना प्यार. एंड देयर आर अबाउट 20 ladies between me and Bhabiji. I walked up to her. I didn't want to announce it. I walked up to her. और मैं उनके नाक के पास अपने हाथ रखती हूँ. She smells it and she also looks at me. That's such strong fragrance of Guruji. I go sit there. I keep smelling it like this and I'm like Guruji, जितना प्यार आप करते हो, इस प्यार पे तो कितनी भी तकलीफें वार दूं. And yes, Guruji, you took that seriously. इसके बाद आपने तकलीफ दी. गुरुजी ने वो बहुत सीरियसली लिया मेरी बात को. मैंने कहा था गुरुजी आप बस अपना प्यार एहसास दिलाते रहे तो ऐसी सब तकलीफें मैं मार दूं आपके ऊपर, सह सकती हूँ. एंड यस आई मेंटेन दैट कि मैं सह सकती हूँ एज लॉन्ग एज गुरुजी ऐसे स्माइलिंग, ही हैज माय बैक, हाउ ही स्माइलिंग, हाउ ही इज क्रिएटेड. आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस सफर. ट्रूली ये कहने के लिए, आई नो बोलने के लिए ये वर्ड्स चूज किए जाते हैं कि हम किसी चीज को ये नहीं कहना चाहते कि मैंने ये किया, हम कहते हैं गुरुजी ने करवाया. लेकिन ट्रूली आई स्वेयर संगत जी, ट्रूली ये तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, ये गुरुजी ने करवाया थी, उन्होंने किया है. बिन बोलियां सब कुछ जानता. हाउ मच ही न्यू आई वांटेड a space to him and me, and he created it, and I'm so thankful to him. And Subodh ji, Anu ji, thank you very much for this satsang today. I'm sure it holds a million blessings for me and a definite panacea to my problems and my ailments, whatever they are. And I really hope that someone today gets an answer or a message to they are going to Guruji through my satsang. And Guruji koi adhikta न्यूनता हुई, please माफ करना महाराज, मुझे माफ करना. तो मैं तो कोई पापी और आप कोई बख्शनहार. एंड यस, द एंडिंग नोट में यही कहूंगी कि कर्मों का जब तकलीफ आती है तो वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है कर्मों की, उसमें से एक कर्म टिक ऑफ होता है. सो महाराज ऐसे ही टिक ऑफ करवाते जाए, क्योंकि कर्म तो किए हुए हैं कुछ, अगर तकलीफ आ रही है तो वही टिक ऑफ हो रहे हैं. बट यस, जितना मर्जी झटके लगे झटने लगे, महाराज गिरने नहीं देते. ये तो बहुत मुझे श्योरिटी है अपने लिए, क्या हम सबके लिए पता है कि महाराज ने उंगली पकड़ी हुई है, वो नहीं छूटती कहीं भी. That I'm very sure. Thank you very much once again. Shukrana Maharaj, Shukrana. Anantam Shukrana. Everyone have a beautiful and blessed day. And those who are heading towards night, may Guruji give you a very peaceful, calming night. And may you all feel his presence in the million ways that he can make it. Thank you very much. Jai Guruji. Thank you. Behan Shukrana Guruji Maharaj. Such a big blessings that we are getting, and it's so true कि गुरुजी the lowest of low में भी फील नहीं होने देते, और उसमें भी यही एक मैसेज देते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा. That's the bottom line and takeaway. And वही थॉट डालते हैं, वही सब कुछ करते हैं, and then he makes us feel कि तुम्हारी बात मैंने मान ली. Such is the grace that of our Maharaj.
एंड वी आर एज राइटली सेड कि हम सब पापी हैं, वही बख्शनहार हैं, सब उनके बच्चे हैं. वी आर ऑल हिज आर्मी, वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन, वी आर ऑल हिज beloved souls, and he's our Prabhu Pati Parmeshwar, as we see and hear in Gurbani. So, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी महाराज का for so many messages, and these times demand कि हम सबको किसी न किसी फॉर्म में एक दूसरे की हिम्मत बनना, and गुरुजी chooses accordingly. So शुक्राना गुरुजी महाराज, and as we all know, we don't know a better word than शुक्राना, so that's what we say. संगत जी, अगर आज आपका बर्थडे है या आपके परिवार में किसी का भी बर्थडे है, तो हम सब संगत परिवार की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं. मे गुरुजी कीप यू in his charan sharan as a blessing. Today we have Gandhi auntie uncle's anniversary, so from entire Sangat Parivar we would like to wish them. And we have Rohit uncle's birthday today, so we would wish him many happy returns of the day. He might not be here on the platform that is here, but his soul is being blessed as a sevadar, the seva he Guruji makes him do. So on that note, we'll take Agya and over to Subodhji. Before Agya, we'll play a Shabad as guided by Guruji Maharaj. After that, you all can unmute yourself. पुल्लन अंदर सबको अपुल गुरु करतार. हम सब गलतियों के पुतले हैं, वो एक परमात्मा ही हमारे गुरु साहब ही परफेक्ट हैं. तो हम सबसे बहुत सारी गलतियां हो चुकी हो सकती हैं, तो गुरु जी माफ करें. शुक्राना गुरु जी. ओवर टू यू सुबोध जी. एक पिता एक सके हम बारिक, एक पिता एक सके हम बारिक, एक पिता एक सके हम बारिक, एक पिता एक सके हम बारिक. तू मेरा गुरहाई, तू मेरा गुरहाई, एक पिता एक सके हम बारिक, एक पिता एक सके हम बारिक. तू मेरा गुरहाई, तू मेरा गुरहाई, एक पिता एक सके हम बारिक, एक पिता एक सके हम बारिक. सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी. हर दर्शन देहो दिखाई, एक पिता एक सके हम बारिक, एक पिता एक सके हम बारिक. तू मेरा गुरहाई, तू मेरा गुरहाई,
Beyan Shukrana Guruji Maharaj. Sangat ji, you can unmute yourself and take Agya. शुक्राना गुरुजी शुक्राना जय अनंतम गुरुजी, गुणगाना शुक्राना शीला गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्रभु सर्वदा शुक्राना गुरुजी for blessing me, शुक्राना जय अनंत गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी Guruji. जय गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।